Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका सेक्शन 2। ऑलरेडी द फर्स्ट सेक्शन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एज अ वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। And today I am going to discuss with you the second section of this chapter, that is outbreak of the revolution. Outbreak of the revolution. इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रिमेंबर that the king wanted to increase the taxes. लुई 16 जो है वो टैक्स इंक्रीज करना चाहता था फ्रांस के अंदर। द रीजंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, फिर भी शॉर्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस समय किंग लुई 16 फ्रांस का राजा बना, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू द लॉन्ग ईयर्स of wars during the old regime. ओल्ड regime के टाइम पर, यानी कि उससे जो पहले के जो रूलर्स थे, they were involved in wars with the neighboring countries, और उसकी वजह से जो फ्रांस का जो ट्रेजरी था, जो उसका खजाना था, वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। The king was extravagant. He used to spend a lots of money on his luxuries. एंड इसके बावजूद भी, डिस्पाइट द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ही एक्सटेंडेड द फ्रेंच सपोर्ट टू द 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका इन द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और इसकी वजह से करीब करीब 1 बिलियन लिवरे का जो डेट था वो फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर इंक्रीज हो गया। एंड द लैंडर्स, दे वर नाउ डिमांडिंग अ हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्रांस के जो फाइनेंस था, जो उसका बजट था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट पर ही खर्च हो रहा था। मोर ओवर, द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड फाइनेंसेस टू कैरी आउट इट्स डे टू डे फंक्शन। भाई, आर्मी को मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने हैं, कोर्ट को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इन सारे एक्सपेंसेस के लिए भी उसको पैसे की जरूरत थी। और स्थिति फ्रांस के अंदर क्या थी कि उसका टोटल जो फाइनेंस था, जो टोटल उसकी इनकम थी, वो उसकी एक्सपेंडिचर से कम थी। यानी कि उसका एक्सपेंडिचर, खर्च जो है, वो इनकम से ज्यादा था। तो इन सभी वजहों से जो किंग था, ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, दैट इज ऑब्वियसली द रेवेन्यू। लेकिन अगर हम फ्रांस के उस समय की स्थिति को देखें तो द किंग वॉज डेस्पोटिक, ही कुड टेक ऑल द डिसीजन बाय हिज ओन। वो अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस ले सकता था, लेकिन ही कुड नॉट इंक्रीज द टैक्सेस बाय हिज ओन। टैक्स को इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना था? To increase the taxes, the king required the approval of the estate general। उसको एस्टेट जनरल का अप्रूवल लेना कंपल्सरी था। नाउ व्हाट वाज दिस एस्टेट जनरल? ये एस्टेट जनरल क्या था? एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी that had the representation
representation of all three estates, all three estates, यानी कि इसकी अप्रूवल लेना बहुत जरूरी था। तो जब भी राजा को वहां पर अगर टैक्स इंक्रीज करना था तो वो क्या करता था, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था और टैक्स को इंक्रीज कर लेता था बाय द अप्रूवल ऑफ द एस्टेट जनरल। जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग जो एस्टेट जनरल का हुआ था, दैट वाज इन 1614 and this meeting was going to help after 175 years। राजा डिसाइड करता था कि मीटिंग जो है एस्टेट जनरल की कब बुलानी है। सो द किंग डिसाइडेड, लुई 16, द किंग डिसाइडेड 5th of May, 5 May 1789 as a day to hold the meeting। मीटिंग कराने के लिए, यानी कि एस्टेट जनरल की मीटिंग के लिए राजा ने 5 मई का दिन फिक्स किया। नाउ टू अटेंड द मीटिंग, फर्स्ट estate sent 300 representatives, second estate again 300 representatives, and the third estate sent 600 representatives। The grand hall in the palace of Versailles इसको तैयार किया गया इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, they were to represented by the educated people। जो प्रॉस्पेरस एजुकेटेड जो लोग थे, they had represented the third estate, prosperous educated people। ठीक है, from the third estate they had represented the third estate in the meeting, right? Women, workers, peasants, as well as the non-propertied men, they did not allow to participate in the meeting। women को, workers को, peasants को और जो नॉन प्रॉपर्टीड जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, उनको इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं था। बट देयर ग्रीवेंसेस, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, दे वर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय around 60,000 letters which the representatives of the third estate brought with them। यानी कि ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, वो अपने साथ करीब करीब 40 से 60,000 लेटर्स वो अपने साथ लेकर आए थे, जिसमें पेजेंट्स के, वर्कर्स के, विमेन के जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो परेशानियां थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपने साथ लेकर आए। While the members of the first and the second estate, or you can say the representatives of the first and the second estate, they were made to sit, but the representatives of the third estate, they were made to stand at the back। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बिठाया गया और थर्ड एस्टेट के लोगों को खड़ा रखा गया। ठीक है, पीछे उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा रखा गया। द किंग put up the proposal of increasing the taxes, and after discussions the time for voting had come। voting का समय आया। अब now at the time of voting
at the time of voting, at the time of voting, what happened? The king wanted to conduct the voting, voting following the old system, ओल्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए वो वोटिंग कराना चाहता था। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्या चीज रखा? दे पुट फॉरवर्ड द डिमांड। अब उनकी क्या डिमांड थी? दैट द वोटिंग शुड बी कंडक्टेड इन द असेंबली एज अ होल। असेंबली के अंदर जो वोटिंग होना चाहिए वो असेंबली एज अ होल हो, जहां पर हर एक मेंबर को, ठीक है, जहां पर हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट मिलना चाहिए, राइट? बट द members of the third estate demanded to hold the voting in the assembly as a whole, where each representative must have one vote. राइट? अब ये जब उन्होंने डिमांड रखा कि भाई अब पुराने सिस्टम के हिसाब से वोटिंग नहीं होगी, नए सिस्टम के हिसाब से वोटिंग कराई जाए, जहां पर हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का राइट हो। जो किंग था, किंग ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। द किंग हैड रिजेक्टेड दिस डिमांड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। और जब राजा ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, देन व्हाट हैपेंड? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट दे वॉकड आउट फ्रॉम द मीटिंग हॉल। वो उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, उसको छोड़कर वो बाहर निकल गए। So these representatives of the third estate, they walked out from the meeting hall. They once again gathered on 20th of June, on 20 June 1789, they again gathered inside an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They viewed themselves as the representative of the whole French nation. Now this was very interesting. ये जो लोग थे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड एस्टेट के, इन्होंने मीटिंग हॉल्स को छोड़ दिया, वहां से वॉकआउट कर दिया। लेकिन 20 जून 1789 ये लोग फिर से इकट्ठा हो गए, ये रिप्रेजेंटेटिव फिर से इकट्ठे हुए और इन्होंने अब क्या किया? अपने आप को ये माना
that they were representing the whole of the French nation. वो पूरे French nation को represent कर रहे हैं, ठीक है? And they both, they were determined that they would not disperse from there. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वहां से नहीं जाएंगे, वो वहां से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते. राइट? So they viewed themselves as the representative of the whole French nation. They decided not to disperse from there till, or you can say until, not frame a constitution, not frame a new constitution for France, which would limit the powers of the king. ठीक है? They recognized themselves as the National Assembly. The National Assembly. Now the representatives, the members of the third estate, or you can say the members of the National Assembly, ये जो members थे, they were very much influenced by the speeches, the powerful speeches, the powerful ideas, influential ideas which were put forward by their leaders. Two among them were worth noticing. One was Abicius. So Abicius, he was belonged to the first estate. That means he was a clergyman and published a pamphlet. What is the third estate? What is the third estate? Right? Mirabeau, he belonged to a noble family and supported the idea of equality among people. Right? So these two were worth noticing. Right? So the National Assembly, it was busy in making the constitution for France at Versailles. लेकिन फ्रांस के अंदर क्या सिचुएशन था? Let us see about that. While the National Assembly was busy at making the constitution for France at Versailles, what do we find? In rest of the country, the situation was grim. In Paris,
in Paris, there was a shortage of bread. Shortage of bread. Right? And when the women standing in long queues did not get bread for their families, they began attacking over the bakeries. यानी कि यहां पर विमेन को लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिली अपनी फैमिलीज के लिए, तो उन्होंने बेकरीज पर अटैक करना शुरू कर दिया. देयर वॉज ऑल अराउंड लॉलेसनेस इन द सिटी. और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए द किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू एंटर इन द सिटी. राइट? सो दिस वॉज व्हाट हैपेंड. Women began attacking over bakeries when they could not get bread for their families even after standing in queues for long hours. Right? To control the situation, the king ordered his troops to enter the city. और उसके बाद हमको पता ही है कि एक रूमर फैल गया कि soon the king was going to order his troops to open fire upon the people. In the countryside also, a rumor spread among the people that the lords of Manor, यानी कि जो feudal lords हैं, उन्होंने क्या किया है? They had hired the band of brigands. आप कह सकते हो इन social elements को उन्होंने हायर किया है, and they were soon coming to destroy their standing crops in the countryside. A rumor spread that the lords of Manor had hired the bands of brigands who were coming to destroy their crops. So the peasants, the people in the countryside, they begin attacking over the palaces, the big bungalows, the palaces of the feudal lords. वहां पर जो भी होल्डेड ग्रेन्स थे उसको उन्होंने लूट लिया. जो मैनोरियल ड्यूज के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने आग लगा दी. Seeing the revolting subjects, the king feared. ठीक है, राजा जो है वो डर गया अपने रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स को देखकर, एंड ही हैड अकॉर्डिंग द नेशनल असेंबली. उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया और ये कहा दैट ही वुड बी गोइंग टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन
framed by the National Assembly. That means he had given up his powers. उसने अपनी powers को give up कर दिया. ठीक है? On 4th of August, on 4 August 1789, August 1789, the National Assembly passed a decree by which system of privileges was abolished. सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया. ठीक है? फ्यूडल ड्यूज को खत्म कर दिया. जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया. चर्च की जो प्रॉपर्टीज थी, नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज थी, उसको भी नेशनल असेंबली ने यानी कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया. और इन सभी स्टेप्स से क्या हुआ? फ्रांस को करीब करीब 2 बिलियन लिवरे की उनको इनकम हुआ. सो दिस वाज हाउ द रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस एंड दिस लेड टू अ चेंज ओवर देयर. आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. ठीक है? और पसंद आया है तो ऑब्वियसली आई विश दैट you all can subscribe my channel, The Incredible Scholars, and you can also share your comments about the videos. ठीक है? वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. ठीक है? बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, so that you will be getting the regular notification whenever a new video is uploaded. Thank you and have a learning day ahead.